exercises. Okay. So before I go, uh, before I start anything about the my presentation, I'll share a story. This is very genuine story of a person who wants to join their exercises regime. Out of us, many aspirant to start the exercises and being consistent. Okay, but it's not uh, everyone's cup of tea, and the major reason is the uh, nutrition, the basics of the lifestyle. The person name was Nidhi. She joined me with a tremendous pain in her spinal region, and she got injured herself in terms of where she is a bedridden person. Okay, at age of 42, 43, mothers of two kids, and she she was bedridden because of a injury of a spine. Now I want when she approached me, she want she was in that particular stage, and then she want to uh, come out of this. Yes, I'll talk in Hindi, no problem. So जो पर्सन थी वो अ, अपने अ, अपना जो इंजरी था उसमें से वो बाहर निकलना चाहती थी, अपना खुद का एक हेल्थ और फिटनेस बनाना चाहती थी. नाउ she tried a lot for the exercises and all, but it was not possible. Okay, and she lied down. She was in the same state for 3 months. And when she came to me, I asked her about her past lifestyle. जब वो मेरे पास आई, मैंने उनको पूछा कि आप आपका टोटल लाइफस्टाइल क्या है, एक्सरसाइज को तो छोड़ दो. जब एक्सरसाइज तभी कर पाएंगे जब आप में कुछ, आपके बॉडी में कुछ बचा हुआ है. Okay? तो आपके बॉडी में एनर्जी है, आपके बॉडी में सपोज उतना न्यूट्रिएंट लेवल बाकी है, रिकवरी करने की पॉसिबिलिटी है, तभी एक्सरसाइज करने का मतलब है. सो आई आस्क अ फ्यू क्वेश्चन जो हम पूछते हैं, एंड देन शी टोल्ड मी अबाउट द लाइफस्टाइल, व्हाट शी वाज ईटिंग एंड व्हाट हैज हैपेंड. तो मैंने उनको बताया कि प्रॉब्लम क्या था. नंबर वन प्रॉब्लम था कि वेट लॉस करना था उनको, और वेट लॉस के चक्कर में वो कई सारे बेसिक्स रूल्स को फॉलो नहीं कर पा रही थी, कर नहीं रही थी. न्यूट्रिशन की, जैसे हेल्दी ब्रेकफास्ट करना, जैसे आपका उनका उनके रिकवरी जो है वो प्रॉपरली ले लेना, ये वो कर ही नहीं रही थी. शी वॉज गोइंग ऑन दी ओनली कैलोरी डेफिसिट न्यूट्रिशन. और इसका जो डिसएडवांटेज जो उनको मिला, वो उसकी उनको भारी कीमत चुकानी पड़ी, जहाँ पे उनको स्पाइनल इंजरी हो गया. और आप में से बहुत सारे डॉक्टर्स या बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, एक बार आपको स्पाइनल इंजरी हो गई, देन इट इज वेरी हार्ड, वेरी वेरी हार्ड टू बी लाइक अ सेम अगेन. आप उसमें से रिकवर नहीं हो के. ये इंजरी आपके, आप जब तक जिंदा हो तब तक ये इंजरी आपके साथ में रहेगी. तो उन्होंने ये लाइफस्टाइल तकरीबन 5 से 6 साल उन्होंने फॉलो किया था, और उनको डिसएडवांटेज भुगतने पड़े इस फॉर्म में. और जैसे ही उन्होंने अपना न्यूट्रिशन प्रॉपरली चालू किया, जैसे ही उन्होंने अपना अपना जो रेजिम है वो एक सेट करना चालू किया, से इन फर्स्ट 6 to 8 weeks, तब उनको रिजल्ट दिखना चालू हो गए. जो पेन थे,
कि एक्सरसाइज एक पार्ट तो है, लेकिन न्यूट्रिशन और उनका जो लाइफस्टाइल था, उन्होंने उनको उतना सपोर्ट किया, जो पेन थी सबसे पहले वो रिड्यूस होना चालू हो गया। नाउ this is a case of 2022. Now 2026. Now she is running for half marathon. Okay, she is running half marathons. So एज बढ़ गई, सब बढ़ गया, लेकिन बॉडी जो थी वो, अगर आप उसका सही पे ख्याल रख देते हो, then she can it can respond you. And one underlying thing, that is, if you not if you are having very good in nutrition, I'm not saying anything fancy meals that I'm coming on my presentations, what to have, what not to have, but you should have a good nutrition, enough nutrition for yourself. Okay, and my request is not to copy anything from online. Okay, आजकल सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम या जो भी है, ये सारे प्लेटफॉर्म तो अवेलेबल है, एंड दे आर शोइंग मेनी थिंग्स फॉर अस। ओके, बट आवर बॉडी इज वेरी प्रेशियस। इट इज इट्स कॉस्ट मोर देन 5 crores if we if you try to sell all organs differently. But and how you play with your body, that is important. If you play wisely, you will get very, you can't imagine the benefits, like this example. So I'm coming on my presentation. Today's topic is what precautions, or what should be your nutrition and supplementation for the beginners in the exercise. So I'm coming on this particular part and present this particular. Please unmute again, Siddharth. Okay. So this is all about the nutrition and supplementations for the beginners to start with. So number one thing, why nutrition matters for a beginner in exercises. Beginner is what? Who is the beginner? Beginner who done the exercises maybe long time back, or that person starting very new, like a college going person. Okay, they not like adolescent, they not start the exercises. Okay, या सेडेंटरी पीपल, जिनको कभी वक्त ही नहीं मिला, लेकिन आज उनको डॉक्टर ने बता दिया कि आप एक्सरसाइज चालू कर लीजिए because you have this problems. Maybe you have the high BP or you have the diabetes and you have to start the exercises. Or for your weight loss, someone inspired himself to start the exercises. Then beginner, define the beginner is very easy. That person hardly done some exercises in his lifestyle or no exercises in his whole life. That person is the beginner. Next stage is coming is the intermediate and advanced people. That is something different. So what beginner face? Okay, most of the time we encountered as a fitness coach with the beginner. Okay, हमेशा हम उनको फेस करते रहते हैं, और मैंने लास्ट मेरे दो डिकेड्स से ज्यादा जो भी मेरा इसमें प्रैक्टिस रहा, उसमें मैंने ये देखा, बिगिनर्स फेस three things in this recent last 4-5 years. अगर आप देखें तो number one is the muscular pain, number two is the sleeplessness, number three is lack of recovery. ये तीन चीजें हमेशा कोई भी बिगिनर मतलब फेस करता ही करता. Now what happened when they face these things? One, they are just give up. मस्कुलर पेन हो गया, आज एक्सरसाइज कर लिया, कल मस्कुलर पेन हो गया,
कल जिम से गायब, no exercise. Muscular pain not reduced, they not came for the exercise. Okay, so sleeplessness भी रहते हैं लोगों को, मेनली वुमेन है या ओल्ड एज लोग हैं, उनको स्लीपलेसनेस ज्यादा हो जाता है एक्सरसाइज चालू करने के बाद में. एंड थर्ड थिंग इज द लैक ऑफ रिकवरी. ये दोनों भी चीजें तभी होती है जब रिकवरी कम पड़ जाती है. रिकवरी कैन बी पॉसिबल फ्रॉम योर राइट न्यूट्रिएंट्स and your good sleep. Now, the three things what nutrition gives us, basically, who start the exercise. One is the energy. We get the energy. Second thing is the recovery. We get the recovery. And third thing is the performance. Okay. So what you have to have for the energy? That's slow acting carbohydrates like fibers. You can have it. Glycogen based food, that is important. Recovery, lean protein sources. This is very important thing for the recovery. And for the performance, you need a nutrition program. Okay. Now, what is the role of supplements? Supplements, not everything. Number one, whole food is always required as for this is that is your foundation. Helpful tool. These these three keys are about energy, recovery, and performance. Supplements is the tool for these three. Okay, and the important thing, complement a balanced diet, not to replace. But the diet, your main foods should not be replaced with these supplements. Okay, it should be an addition. It should be like when you don't have the resources, like you have lack of proteins, you have lack of vitamins, minerals in your diet, then you should go with supplements. But first, you will try all your effort to have the whole foods from the nature. That is the number one thing I feel it. Okay, or what we practice it. Why nutrition matters for the exercise begins. Nutrition is the foundation for the consistency. जैसे मैंने ये निधि के केस में बताया कि जब तक न्यूट्रिशन नहीं था तब तक कंसिस्टेंसी नहीं. Second important thing, understand the connection between the exercise and nutrition fast. जितना आप जल्दी समझ जाओगे कनेक्शन क्या है, कैसे रिकवर कर लेता है, कैसे आप आज एक्सरसाइज कर लिए, न्यूट्रिशन कितने टाइम में आपको रिकवर कर रहा है, नेक्स्ट सेशन से पहले पहले आप रिकवर होके तैयार हो रहे हो. सो दैट इज द नेक्स्ट थिंग. एंड थर्ड important thing is the prioritize nutrition for the get recovery and repair. Okay, recovery and repair, these two are different things. Repair your muscle tissues, okay, that can be happen different time. Recovery is the whole part which is including the repair as well. Beginners must, this is something underlying things, beginner must initiate nutrition along with the exercise. If you are trying only exercise, it is not possible to sustain for long terms. Hydration. Okay. Hydration is very essential. अभी समझ चालू है ओवरऑल इंडिया में, तो आपको तो समझ आ ही जाएगा क्या क्यों हाइड्रेशन रिक्वायर्ड है. बहुत सारे लोग मतलब डिहाइड्रेशन के केसेस, हीट स्ट्रोक के केसेस हम देखते हैं. बट इन द एक्सरसाइजेस, exercise performance, hydration maintain the body temperature, transport nutrients, and maintain joint lubrication during the exercise. Dehydration, impaired concentration. You just try it. If you're dehydrated, you will come to know like you get confused when you're dehydrated. Second thing, increases the fatigue. Okay,
So fatigue can come during the exercises, even before the exercises, between the exercises, after the exercise. So you have to just evaluate and see with open eyes. And third important thing, reduce the endurance. Okay, so these are the very visible differences during the exercises, like for uh, the hydration and dehydration. Even 2% dehydration can reduce physical performance significantly, right? So, what we normally recommend before you start the exercise, use the uh, find out your urine color. Okay, if that is the pale yellow, then you have to have water and the electrolytes. You have to add those water and electrolytes in your body. If that is crystal clear, then you are quite hydrated. This is something important in summer's time or any time, I would say. This is good test to have. Common supplements for the beginner. Okay. Many adolescent college going people came to me and asking me कि मैं क्या खाऊं. Whenever you go outside, they get confused. What I should have it, मैं कौन सा सप्लीमेंट खाऊं, कौन सा ना खाऊं, क्योंकि आज मार्केट बहुत सारे सप्लीमेंट्स है और डिफरेंट डिफरेंट एनहांसर्स डिप्रेसर्स से भरा हुआ. Okay, so first, protein supplements, something required. Okay, minerals, vitamin D, omega 3s, these are required. Beginners should not use pre-workout fancy sugary drink. Okay, creatine, ये आपको प्री वर्कआउट कोई लेने का जरूरत नहीं है. इफ यू हैव सिंपल बनाना, यू कैन गो फॉर द वर्कआउट. क्रिएटिन की कोई जरूरत नहीं है. क्रिएटिन मेडअप इन योर बॉडी, ये तैयार होते रहता है. नॉर्मली ये डिप्लीट बहुत ज्यादा नहीं हो जाता है. बिगिनर्स नॉट रिक्वायर्ड द क्रिएटिन. पेप्टाइड्स, एनहांसर्स, these these are not required. Whatever मैंने जो बताया कि आजकल मार्केट में जो चल रहा है, this is these things, and everyone want you to take their these all supplements. कल ही मैं एक रोड से गुजर रहा था and I see say 15-16 old kid getting that creatine powder in his hand. So इतना मार्केट आज भरा हुआ है, but many times we can't do much thing until they came to us. The next important thing is tailored nutrition according to your goals. किसी को building muscles करने हैं, then high protein intake required है. 1.6 to 2.2 grams per kg of body weight. It is required. Where more of the vegetarian people need the supplementations here with the lean protein sources. But remember one thing for sure, that is, first try to have a natural intakes. Okay, fulfill your natural intakes in all meals, and then if required, suppose मेरे पास में कोई आ जाता है, then I'm telling her, use plant protein. That's not a problem to have a plant protein. But before, what do you have? आप अपने डाइट में क्या ले रहे हो? आप खा रहे हो प्रॉपर चीजें या नहीं खा रहे हो? पनीर खा रहे हो, आप स्प्राउट्स खा रहे हो, कर्ड खा रहे हो, नहीं खा रहे? First, start having those things. Once you habitate with this and you need more, then go for the plant protein or whey proteins. These are the options available. Losing fats. Losing fats. One is the losing overall body weight, जो obesity में है. Second, only central obesity है, तो भी losing fat loss करना पड़ता है. When you are looking as in a fat loss goal, then moderate calorie deficit required while keeping protein high to preserve muscles. Okay,
सो लोग कैलोरी डेफिसिट तो कर लेते हैं वेरी इजीली by watching apps and all, but they don't know about how much protein they have to keep it. And the important thing is the ratio, macro ratio, protein, carbs, fats, and micros. Success ratio is 40% of protein, 30% of carbs, 20% of fats, and 10% of vitamin minerals. It should be in their diet. Okay, 5% up and down possible. Those buffering is possible. Improving endurance for someone coming for the improving endurance, like stamina बढ़ाना है, then अगर आप ले लेते हो तो slow acting carbohydrates like the fiber. Don't forget about the recovery from proteins. Okay, so main thing is the slow acting carbohydrates and proteins both are required in the endurance training athletes or even the beginners. Supplement safety and myths. Supplements are not magical pills, but tools to support good diet. Okay, supplements हमेशा आपको सपोर्ट डेफिनेटली करेंगे जब आपका डाइट अच्छा हो. मिथ क्या? You need every supplement on the market. Okay, आज आप ऐसे कोई भी सप्लीमेंट शॉप्स में चले जाएंगे बाहर के, देन पीपल कैन से यू ओके यू कैन टेक क्रिएटिन, यू कैन टेक वे प्रोटीन, यू कैन टेक वेट गेनर. आई सीन पीपल कि उनको प्रोटीन भी दे दिया और वेट गेनर भी दे दिया. ओके, दिस मच प्री वर्कआउट दे दिया, देन और कुछ मल्टीविटामिन दे दी. ओके, सो they can sell you anything, but you should be smarter कि मुझे कौन से सप्लीमेंट की जरूरत है. So सबसे पहले most beginners only need basics like protein and the multivitamins, not more than that anything. Okay, number one important thing, quality matters. Okay, आज अगर आप supplementation industry देखेंगे, where I stay in Pune, there are few factories who creating supplements in just say 300 kgs. मैंने बता दिया सिद्धार्थ के नाम से वे प्रोटीन तैयार कर लीजिए. They are ready to do that. Okay, this much weird industry it is in the supplement. So quality matters. I shifted myself to excess and plant protein with Nutrilite because they have a quality. Okay, I found very good results with excess on myself, and whoever I given, they also get a very good result. Never get bloating, never get like low in proteins. Okay, never they feel like performance problem in the workouts. So this quality they require. They could get a good sleep. Even dosage is the key. Okay, आप कितना dosage ले रहे हो, that is also important. You need the professional guidance for that particular thing. And these are the essential supplements. Suppose someone beginner came in my last presentation here, I told beginners not required the very good, very high like whey proteins or kind of thing, but plant proteins can be good for them. They can mix it anywhere. They can make the juice. They can add it in their normal meals and have the protein powders. They can have the salmon omega soft gels. This keep the themselves active. Hormonal जो उनका secretion है वो बहुत अच्छा हो जाता है. And Calmette D plus K2. This is very good supplements. What problem I told कि स्लीपलेसनेस होता है और लैक ऑफ रिकवरी जो होती है, उसके लिए ये जो कैलमेट डी प्लस K2 है, ये बहुत ही इफेक्टिव सप्लीमेंट है. सो
You can have all these three, depends, आप पहले evaluate करिए खुद को and then you can have it, or like as per your requirement you can go for these supplements. Okay, but I don't recommend more than three. Even plant protein and salmon omega 3 and multivitamin is good for few people. Depends what you needed. So you need a validation before you start taking or start buying these supplements. Practice tips for beginners: focus on whole foods first. Prioritize vegetable, food, and lean proteins uh, before you considering these supplements. Second important thing, stay consistent. आपको अपना रेगुलरिटी रखना ज्यादा जरूरी है. आज आज कुछ खाया, कल कुछ नहीं खाया. बहुत सारे लोग ऐसे ही कर लेते हैं कि जो सप्लीमेंट्स या आप अपने फूड भी जब लेते हो, तो कई लोग आज ब्रेकफास्ट किए, कल नहीं किए, फिर से अपना डिनर मिस्ड आउट कर दिए, बहुत लेट डिनर कर दिए. देन इट इज वेरी हार्ड to get recovery, okay, and get into the exercises again and again. And so you should have normally you should have a diary, right? Or you should have something like a calendar where you can prepare your breakfast, lunch, dinner. Okay, और आज क्या खाया ये मत लिखो, आप पूरे वीक का लिख दो. संडे टू सैटरडे यू राइट इट डाउन कि मैं क्या खाने वाला हूं. ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर. आप क्या खाने वाले हो ये सबसे पहले लिखो. जब आप फॉलो करना चालू करेंगे, आज मंडे है, तो मंडे को मैंने रात को इवेलुएट करो सोने से पहले कि मैंने मेरा ब्रेकफास्ट लिया लिया करेक्ट है, तो इसमें से क्या मिस्ड आउट हो गया. लंच लिया, परफेक्ट है, all things done. Dinner ले लिया, done. Then I took 2 supplements, like I took my multivitamins and protein shake. Yes. So this is a good practice. All right, first you plan and then just tick mark what you have or what you don't have. Okay, so at end of the day and end of the week, you will get a calculation. Okay, these many meals I added, these many meals I don't. Okay, and then you can evaluate your results really well. And this is a very good guide I implement with thousands of people, and who follow it, they reduce their weight or they gain their fitness definitely. If they not follow, I'm giving them in the writing, you are not going to get a results. You do whatever. You write it down, so you will get more discipline. And this is something much important for any person who start their exercises along with the competition. And yeah, this is something these professional guidance that I am giving. And thank you very much for this wonderful opportunity. This is my email address and phone number. You can connect anytime. That's it. थैंक यू. बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ जी, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी और अच्छी सेहत कैसे हम लोग मेंटेन कर सकते हैं इस विषय में आपने बहुत अच्छा प्रकाश डाला है. सो थैंक यू वंस अगेन. और अब हम बुलाना चाहेंगे नारंग सर को. सो प्लीज ओवर टू यू सर. गुड मॉर्निंग एवरीवन. और सिद्धार्थ तो प्रोफेशनल हैं और इस इंडस्ट्री में बहुत देर से काम कर रहे हैं, इसलिए इनका तो बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है. एंड ही हैज़ ट्रेन्ड सो मेनी पीपल एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव हिम इन दिस ग्रुप. और ये जब भी अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं तो उसमें इनकी प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़बरदस्त रहती है. और इन्होंने जैसे पहले स्टोरी बताई शुरू में उस लेडी की, ये बहुत बार देखा है मैंने कि जो लोग अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करते हैं ना, वो सबसे पहले कैलोरी रिड्यूस कर देते हैं.
जो कैलोरी इनटेक है ना उसको घटा दो। तो वो सबसे आसान लगता है, क्योंकि दो चीजें हैं वेट मैनेजमेंट में, कैलोरी इनटेक, कैलोरी कंजम्पशन। अब कैलोरी कंजम्पशन बढ़ाने के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जाएंगे, काम करेंगे, हाँ एक्सरसाइज करनी होगी, तो कैलोरी कंजम्पशन बढ़ेगी। कैलोरी रोकना आसान है, क्योंकि सब सोचते हैं यार खाना बंद कर लो, वो सही है, तो मिनिमम कर देते हैं। शुगर तो है ही खराब, लेकिन उसको कट करते हैं फटाफट, और उसको तो करना भी चाहिए, लेकिन और बहुत कुछ भी कट कर देते हैं। सबसे ज्यादा गलती क्या करते हैं लोग, तो कार्ब्स को कम कर देते हैं बहुत ज्यादा। उनको लगता है कि कार्ब जो है वो हमारे लिए शायद हमारा वजन ही बढ़ा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली द ट्रूथ इज दैट आवर बॉडी नीड्स a बैलेंस ऑफ एवरीथिंग, बैलेंस ऑफ प्रोटीन, बैलेंस ऑफ कार्ब्स एंड बैलेंस ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। तो सब कुछ ही हमें चाहिए। तो वो कार्ब्स जो कट करते हैं उससे उनको बहुत लॉस हो जाता है, तो इसीलिए गाइडेंस बहुत जरूरी है। और जैसे उसने अपनी कोई बंदा अपना ही नुकसान कर लेता है, तो वो उससे बचता है। तो वी हैव हैंड रेज फ्रॉम शैलेश एंड फ्रॉम डॉक्टर राकेश मेहरोत्रा। मैं इनको अपने साथ लेता हूँ स्पॉटलाइट पे, एंड बोथ ऑफ देम, एंड आल्सो विल टेक सिद्धार्थ हियर, इन्हीं से पूछ रहा हूँ पीछे। एंड प्लीज अनम्यूट डॉक्टर राकेश मेहरोत्रा। सर मेरे दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, एम आई ऑडिबल? यस यस। यस। सिद्धार्थ जी से ने ये जो रेशियो बताया है 40 30 20 एंड 10, 40 इज कार्बोहाइड्रेट, 30 इज प्रोटीन, 20 इज फैट एंड 10 इज माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैं यहाँ पे ये करेक्शन चाहूंगा या एक्सप्लेनेशन चाहूंगा कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का रेशियो जो है वो इसमें नहीं शामिल होना चाहिए, क्यों? बिकॉज दे आर ऑल इन माइक्रोग्राम्स। So, what is the rationale of this addition of 10%? That I want to know, then I will add something more. This is the ratio of protein is 40%, carbohydrate 30% and fats 20%. विटामिन मिनरल्स जो भी है मैंने 10% इसलिए बताया बिकॉज इट्स एडिंग I would say those are the required for the assimilation. Most people having problem of assimilation, जो मैक्रोज खा रहे वो अगर शरीर तक नहीं पहुंच रहे, then it is very hard to get good muscles. नहीं, I want to correct it. मैं कह रहा हूँ कि माइक्रो का रेशियो इसमें होना ही नहीं चाहिए। माइक्रो का रेशियो, अब माइक्रो का रेशियो इसमें होना ही नहीं चाहिए। माइक्रो तो माइक्रोग्राम्स में है, और कैलोरी, माइक्रो से कैलोरी तो मिलती नहीं है। तो ये जो कैलोरी मिलती हैं मैक्रो से मिलती हैं, तो उसमें हमें प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट का रेशियो है, वो अलग अलग लोग अलग बताते हैं। खैर वो उसमें मैं कंफ्यूजन में नहीं पड़ता हूँ, लेकिन बेसिक थिंग इज कि मैक्रो शुड बी, कार्बोहाइड्रेट शुड बी 50% or less than 50%. That is the optimal thing. And protein is 30% and rest is fat. तो रेशियो माइक्रो के लिए रेशियो इसमें नहीं ऐड होना चाहिए। यू कैन करेक्ट इट, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। नंबर दो, कैन आई आस्क द नेक्स्ट क्वेश्चन? यस यस, हाँ जी डॉक्टर साहब। हाँ, दूसरा ये है कि जो प्रोटीन है हमेशा ये डिस्प्यूटेड टॉपिक है, और हेल्थ इंडस्ट्री में प्रोटीन में बहुत ओवर एम्फेसाइज होता है BCCA, ब्रांच चेंज अमीनो एसिड। तो ये बहुत एम्फेसाइज करके लिखा होता है। तो मैंने इधर स्टडी किया कि आखिर ये क्या है, मतलब ब्रांच चेंज अमीनो एसिड तो उसमें भी होते हैं ऑल प्लांट प्रोटीन में। तो आखिर इस इंडस्ट्री में क्यों ऐसा होता है कि बार बार इस चीज को एम्फेसाइज किया जाता है? तो 9 इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, उसमें सिर्फ 3 ब्रांच चेंज अमीनो एसिड होते हैं, ओनली 3। और ये जो जैसे हमारे ही दो प्रोडक्ट हैं, ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर और एक्सिस वे प्रोटीन, तो जो ब्रांच चेंज अमीनो एसिड होते हैं वो इसमें मतलब एक तरीके से कह दें कि कुछ एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऐड कर दी जाती है।
जितने चाहिए होते हैं, यूजुअली 5 ग्राम चाहिए होते हैं। तो लेकिन ये ब्रांच चेंज अमीनो एसिड ये माना जाता है कि ये मसल की रिकवरी में फास्ट एक्शन मतलब हेल्पफुल होते हैं। लेकिन जैसा बताया जाता है कि आपने प्री वर्कआउट खाया, इतनी जल्दी मसल तक कुछ भी नहीं पहुंचता। इवन आईवी इन्फ्यूजन भी अगर हम लगाते हैं किसी चीज का इंट्रावीनस, तो वो भी नहीं पहुंचता। तो प्री वर्कआउट खाने से मसल फास्ट रिकवरी होगी, ये एक बहुत ही डिस्प्यूटेड टॉपिक है। और मैं बाद में एक डॉक्टर का वीडियो भी इसी पे शेयर कर दूंगा कि ब्रांच चेंज अमीनो एसिड की क्या कंट्रोवर्सी है और क्या फैक्ट्स हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर सिद्धार्थ जी कुछ कहना चाहें इसके बारे में तो बताएं। सलेश से बात करते हैं मेरे ख्याल। हाँ सिद्धार्थ, डू यू वांट टू ऐड समथिंग ऑन दिस बीसीसीएस? नो सर, इट ओके, इज मच क्लियर। यस। ओके। सलेश, आई थिंक वी लॉस्ट सलेश। सलेश को मैंने स्पॉटलाइट पे रखा हुआ था। या सलेश, यू कैन अनम्यूट प्लीज। या बॉस, थैंक यू वेरी मच। मैं जल्दी से ऐड करता हूँ, 1 ही 2 मिनट का समय बचा है। पहली बात कि सिद्धार्थ का जो गांव है वो रहते पूना में है, बट उनका गांव गोवा से 30 किलोमीटर पहले है। और वो फिलहाल अपने गांव में थे, अभी जल्दी ही पहुंचे हैं पूना। हापुस का खेती कर रहे हैं, आम जो हापुस होता है। एंड ही वांटेड टू सेंड इट टू एवरीबडी, बट अनफॉर्चुनेटली वो जब वहां पे कोरियर वोरियर पे बात हुआ, आपको भी भेजना चाहते थे, लेकिन वो पता चला कि वो किसी तरह से पॉसिबल नहीं है। तो जो लोग पूना के आसपास रहते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सिद्धार्थ से बात करके आप अपना हापुस आम तो ले ही लीजिए। और दूसरी बात ये कि सर, ये कल शाम तक बिल्कुल तैयार नहीं हो पाए थे मीटिंग के लिए, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, करना है। क्योंकि ये इतनी मीटिंग्स करते थे, उन्होंने इतनी जल्दी इतना अच्छा सा प्रेजेंटेशन दिया। मेरे लिए एक ही टेक पॉइंट है आज का बहुत अच्छा, कि हम क्या 1 हफ्ते में खाएंगे वो हमें पहले से लिस्ट बना लेनी चाहिए। ये तो गेम चेंजर है। 40 साल से मैं भी एक्सरसाइज कर रहा हूं, ये मेरे लिए भी नया था। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आज पता चली कि रोज मीटिंग अटेंड करने पे इतने इतने सालों के बाद भी कुछ ऐड हो सकता है। आई थैंक गॉड एंड आई थैंक यू एंड आई थैंक एवरीवन। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। बिल्कुल ठीक बात है सलेश। ये प्लानिंग होनी चाहिए, क्या खाना क्या नहीं खाना, अगर आप प्रॉपर कुछ गेन करना चाहते हो। अगर रूटीन चल रहा है तो फिर तो बढ़िया ही है, फिर कोई ऐसी बात है ही नहीं। और आम खाने तो डेफिनेटली पहुंचना पड़ेगा, पुणे जाना चाहिए, आम खाने चाहिए। आम तो एक ऐसी चीज़ है, बढ़िया, मिलते भी नहीं है। और एक और सिद्धार्थ की प्रेजेंटेशन में अच्छी चीज़ थी कि डुप्लीकेसी बहुत है, स्पेशली प्रोटीन्स में। जैसे उन्होंने कहा कि मैं अपने ब्रांड का प्रोटीन बनाना चाहूँ तो मेरे को दे देंगे, सिंपली मेरा नाम लगा के। और उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हैं बहुत ही वीक हैं। और इन्होंने कहा कि इनका फेथ न्यूट्रलाइट पे इसलिए है क्योंकि न्यूट्रलाइट, दो तीन चीज़ें हैं। एक तो न्यूट्रलाइट की क्वालिटी बहुत हाई है, दूसरा अपनी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, तीसरा डायरेक्टली आपको बिलिंग कंपनी से आती है, तो आपको कंपनी सप्लाई करती है। नहीं तो पता नहीं, आप जो भी आप प्रोडक्ट लेते हो, कभी भी आपने सप्लीमेंट लेने हैं तो आप जाके कहीं से मार्केट से लोगे या जिम से ले लोगे। तो वो पीछे से कहाँ से लाया है, वो भी अगर वो बंदा सही भी है जिससे आप ले रहे हो, पर वो कहाँ से लाया वो भी श्योर नहीं है कि उसके पास आया कहाँ से है। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है डुप्लीकेसी की। और कहा जाता है कि प्रोटीन सप्लीमेंट बहुत ज़्यादा डुप्लीकेट पाए जाते हैं। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी वैल्यू एडिशन करी, बिल्कुल। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर किसी को नहीं पता ना, तो वो ये नहीं जानता कि मेरे को सब कुछ बैलेंस करना पड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स और विटामिन मिनरल अकॉर्डिंग टू देयर आरडीए मेरे को लेने पड़ेंगे। 100% आरडीए उसकी रिक्वायरमेंट है, कोई भी विटामिन मिनरल कम नहीं होना चाहिए बॉडी में। और इसीलिए सप्लीमेंटेशन इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आज के जो डाइट है उसमें इतना आसान नहीं है कि आप स्पेशली दो चीज़ें, प्रोटीन और विटामिन मिनरल्स, इनको आप पूरा कर लो, ये बहुत ही मुश्किल है। हो सकता है कार्बोहाइड्रेट अगर आप चाहो तो पूरे कर लो, फैट्स भी बहुत डिफिकल्ट है। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 की रेशियो को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। ओमेगा 6 तो मिल जाता है, ओमेगा 3 बहुत ही कम है, स्पेशली वेजिटेरियन लोगों की डाइट में। तो जब हम अपनी डाइट को एनालाइज करते हैं, जैसा कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हमें देता है, तो हम देखते हैं कि सप्लीमेंट क्यों जरूरी है। सो आज की प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया थी। आई अनम्यूट एवरीवन एंड विल जस्ट रैप अप दिस प्रेजेंटेशन सो एवरीबॉडी। थैंक यू ग्रेट सर, थैंक यू प्रेजेंटेशन, सर। थैंक यू। Thank Thank you. you. Thank you, Siddharth. Thank you, Thank you, amazing everyone. presentation. Thank you, Dr. Jabardast Bhaskar. बात आपने आपने Thank काफी you, अच्छी बात Thank की। you very Siddharth. much. Thank you, sir. Congratulations. Thank Thank you, you, sir. Siddharth ji. Thank Wonderful you. Thank you, Siddharth. presentation. थैंक यू, थैंक यू। Thank you, Siddharth ji. Wonderful presentation. Bye, Thank everybody. you. Right. Thank you, Siddharth. Thank you.
Thank you, sir. Thank you, Thank sir. you.